पिला माने हमें प्रीवियस क्लास रे मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन मिरर रो मैग्निफिकेशन फार्मूला पढ़थिले किछटा न्यूमेरिकल डिस्कशन करथिले बाकी हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टा टोटल सरी सारा पर हमें चेष्टा करबा गोटे क्लास रे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रो नै कि सीएचएस रे कोन कोन न्यूमेरिकल आसी ता डिस्कस करबा तो एबे हमें जिबा रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन पिला माने रिफ्रैक्शन कथा केते बेला आसे जेते बेले लाइट टा गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को जाए गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को गले लाइट रो सब किछि चेंज हो जाए लाइट रो स्पीड चेंज हुए लाइट रो वेवलेंथ चेंज हुए लाइट रो पाथ भी चेंज हो जाए लाइट रो फेज भी चेंज हो जाए सब चेंज हो जाए केवल कांस्टेंट गोटे कैरेक्टर रुहे दैट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट रुहे माइंड भीतर क्वेश्चन आसो जे रिफ्रैक्शन रे जदी सब किछि चेंज हो जाउछे ताले कलर टा चेंज होबो कि नहीं कलर टा चेंज होबनी कलर टा भी कांस्टेंट रहबो पुनी एटी क्वेश्चन आसला जे जदी कलर टा चेंज होउनी हम जानि छे विविगर हिसाब रे वेवलेंथ टा चेंज हेले कलर टा भी चेंज होउची फ्रीक्वेंसी टा चेंज हेले कलर टा भी चेंज होउची ताले कलर टा के डिसाइड करूची वेवलेंथ डिसाइड करूची कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करूची गोटे कथा पहला माइंड भीतर फीड करो कलर टा लाइट रो फ्रीक्वेंसी एयर मीडियम रे केते से ही डिसाइड करिवो कलर टा कोन ओ कथा बुझी परछो लाइट रो फ्रीक्वेंसी एयर मीडियम रे केते से ही डिसाइड करिवो कलर ठीक अछि तो रिफ्रैक्शन कहिले चेंज इन characteristics change in characteristics of characteristics रे पिला कोन कोन जाउची वेलोसिटी जाउची आ कोन जाउची वेवलेंथ जाउची आ कोन जाउची पाथ जाउची आ कोन जाउची फेज जाउची change in characteristics of light when traveling from one medium to another medium is called refraction. माननीय पिला माने एटा होची इंटरफेस इंटरफेस कौन पिला इंटरफेस कौन पिला जे कि गोटे मीडियम आ गोटे मीडियम को सेपरेट करू जेंति गोटे घर आ गोटे घर को गोटे कांथ सेपरेट करूची जेंति इंटरफेस गोटे मीडियम आ गोटे मीडियम को सेपरेट करूची माननीय एटा हला मीडियम 1 एटा हला मीडियम 2 एटा को हमें सपोज कहिबा रेयर मीडियम एंड एटा को कहिबा डेंसर मीडियम पिला डेंसर मीडियम रेयर मीडियम किए डिसाइड करे कोटा डेंसर होबो कोटा रेयर पिला मने रख लाइट रो स्पीड जोठी अधिक जो मीडियम रो अधिक लाइट पाई सेटा रेयर जोठी कम सेटा डेंसर जेमती कि लाइट रो स्पीड एयर रे सबुठो अधिक जोटा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड लाइट रो स्पीड वाटर रे कम तो लाइट पाई वाटर होची डेंसर एंड एयर होची रेयर किंतु साउंड पाई साउंड ता एयर अपेक्षा वाटर रे बेसी स्पीड रे जाए तो साउंड वेव पाई एयर होची डेंसर वाटर होची रेयर हेले
कोटा डेंसर हम कोटा रेरर हम किए डिसाइड कर लाइटर स्पीड जो वेव कथा आम कहे तार स्पीड ही डिसाइड कर जो स्पीड अधिक से रेरर जो स्पीड कम से डेंसर ठीक अच्छे जोटा सिचुएसन आम ना मीडियम वन किसी डेंसर अच्छी मीडियम टू किसी रेरर अच्छी सिचुएसन टिके चेंज करदेवा एटा सपोज आमर मीडियम वन जोटा कि डेंसर मीडियम एंड एटा सपोज आमर मीडियम टू जोटा कि आमर रेरर मीडियम ठीक अच्छे आम कौन कले गोटे रे आसला इंटरफेस पड़ा जो रेटा इंटरफेस पड़ा सेटा को आम कहवा इंसिडेंट रे कौन कहवा इंसिडेंट रे जो पॉइंट रे पड़ा सेटा को आम कौन कहवा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को लेकिन इंटरफेस सहित परपेंडिकुलर रे गोटे लाइन ड्रॉ कली एटा को आम कौन कहवा नॉर्मल लाइट जिते बड़े रेरर मीडियम रु डेंसर मीडियम को जाउछि देख जदि मीडियम चेंज न करू थांता मानि ना मीडियम चेंज होनी गोटे मीडियम अछि तो लाइट केमती जीवा कथा लाइट तो एमती सीधा जीवा कथा जब से रेरर रु डेंसर को जाउछि बेंड हैला कुआडू को बेंड हैला मन रख टुवर्ड्स द नॉर्मल नॉर्मल आडू को बेंड हैला एंड एटा को हमें कहिबा रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे नॉर्मल सहित जो एंगल करे दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सहित जो एंगल करे दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक अछि तो ये नो डाउट ए केस रे जदि लाइट टा रेरर मीडियम रु डेंसर मीडियम को जाउछि तो नो डाउट आई इज ग्रेटर देन आर एंगल ऑफ इंसिडेंस अधिक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम सिमिलरली आम जब डेंसर रु रेरर को जीवा सपोज एटा हला इंसिडेंट रे एंड एटा हला नॉर्मल हमर जदि मीडियम चेंज न करू थांता एमती सीधा जाई थांता एमती सीधा जीवा कथा बट ये नॉर्मल ठारू दूरे ही जीवो इठी एटा कोन पिला माने इंसिडेंट रे इठी कोन पिला माने एटा रिफ्रैक्टेड रे एटा एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए केस रे आई इज लेस देन आर एटा 8 छोट आईटा 8 छोट अछि नहीं त माने हम दुईटा कथा कंक्लूजन रे पहुंचले जदि लाइट टा डेंसर रेरर मीडियम रु डेंसर मीडियम को जाउछि ताहले बेंड हबो रेरर मीडियम डेंसर रु रेरर को गले भी बेंड हबो बाकी रेरर रु डेंसर को गले नॉर्मल आडू को बेंड हबो टुवर्ड्स द नॉर्मल बाकी डेंसर रु रेरर को गले अवे फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्मल ठू दूरी जीव ठीक अछि फटाफट लिखि दियो हम आगु को जीवा जदि हमें नॉर्मल इंसिडेंस करवा नॉर्मल इंसिडेंस माने मानिनियो एमती सिचुएशन नबा एटा हमर इंटरफेस एटा हमर इंटरफेस एटा हला मीडियम 1 एटा हला मीडियम 2 जदि एमती इंसिडेंट होची नॉर्मल इंसिडेंस को होंती तको नॉर्मल इंसिडेंस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस कते 0 ताले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 बिना किछ डेविएशन रे पड़े ठीक अछि बिना किछ डेविएशन रे पड़े केते बेले त नॉर्मल इंसिडेंस केते बेले नॉर्मल इंसिडेंस ठीक अछि बहुत बढ़िया एटा लिखि दोछि पिला तुमको जदि क्वेश्चन बेले बेले तुम्हारे के बहुत टाइम आसे से इन रिफ्रैक्शन क्वेश्चन बेले बेले आसे इन रिफ्रैक्शन which character does not change कोटा चेंज हुए नहीं मनकर ऑप्शन रे देथिबो वेवलेंथ वेलोसिटी एम्पलीट्यूड
फ्रिक्वेंसी मन रखिए आंसर कौन हो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसीटा चेंज हुए नहीं ठीक अच्छे तो एबे हमें जिबा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कोठी के जिबा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पिला माने दुईटा लॉ अछि जम जम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रे दुईटा लॉ पढुतले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इट इज द फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अछि तो कौन कहूँ देखो एटा सपोज हमर इंटरफेस कौन एटा पिला हमर इंटरफेस एटा हमर इंसिडेंट रे एटा हमर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मानिने एटा हला मीडियम 1 एटा हला मीडियम 2 मानिने एटा होछ हमर रेयर मीडियम एंड एटा हमर टेंसर मीडियम ठीक अछि तो एमती जाई थांदा द बेंड हो कोड को बेंड हो towards the normal this is angle of incidence this is angle of refraction तो फास्ट लॉ कौन कहला फास्ट लॉ कहला एटा को हमें कौन कहूची पिला इंसिडेंट रे एटा को हमें कौन कहूची पिला रिफ्रैक्टेड रे एंड एटा को हमें कौन कहूचे नॉर्मल at the point of incidence फास्ट लॉ कौन कहला इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence all lie in one plane गोटे प्लेन रहिबे के पिला माने इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनटा जको गोटे प्लेन रहिबे सेकंड लॉ जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पिला माने सेकंड लॉ जोटा हमें कहूचे स्नेल्स लॉ बेले बेले पिला स्नेल्स लॉ केवल 2 मार्क रो क्वेश्चन आसे स्नेल्स लॉ केवल 2 मार्क रो क्वेश्चन आसे कौन से कहूची so कुछ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने से कौन कहला सेकंड लॉ कहला sin i by sin r is equal to constant पिला माने ए कांस्टेंट गोटे नुवा गोटे टर्म हमें डिफाइन करू से कांस्टेंट ना कोन एटा को एमती म्यू सिंबल रे दिया जाए किछि किछि बही रे भी एमती n सिंबल रे दिया जाए एटा को पढ़ांती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोना को पढ़ांती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एमती लिखिबा हमें मो हिसाब रे मु एमती लिखुची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोठी को जाउछि कोठु आसिला एक केस रे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोठी को जाउछि सेकंड मीडियम को जाउछि कोठु आसिला फर्स्ट आसिला एमती लिखि किंतु बेले बेले कंफ्यूज हवा में सब बेले जे sin i by sin r is equal to refractive index of second medium with respect to आको पढ़ंती एमती पिला refractive index of second medium with respect to first medium हम जदि एटा लिखाई था μ1 2 कोन लिखाई था को कोन पढ़ता थे refractive index of first medium with respect to second पिला बेले बेले बहुत पिला कंफ्यूज ही जानती जले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू समस्त एमती मन रखि देती sin i by sin r is equal to refractive index of second medium with respect to first medium बट हम एमती मन रखिबा sin i by sin r is equal to refractive index of कोठी को जाउची कोठो आसिला इटी सेकंड मीडियम को जाउची तो 2 इटी फर्स्ट मीडियम आसिला तो 1 ठीक अछि
हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विषय बहुत किसी जानवर अच्छे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली कौन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन करे एक्चुअली? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कौन इनफॉरमेशन दिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये इनफॉरमेशन दिए कि को मीडियमटा डेंसर अच्छे को मीडियमटा रेयर अच्छे। लाइट केस रे जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक से सेते डेंस, जमती कि एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ला 1, व्हाट ग्लास रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मे बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहार जिते अधिक हम से मटेरियल से अधिक डेंस। कथा बुझुछ? आम डिटेल रे बुझा पड़ो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखुच पिला आमको जानवा पड़ो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तार सिंबल होची म्यू। मन रख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फास्ट मीडियम है स्पीड ऑफ लाइट इन फास्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फास्ट मीडियम है स्पीड ऑफ लाइट इन फास्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सेमती मत कहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फास्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड कौन होता v2 by v1, v2 by v1। मैं तुमको ऑलरेडी कहि सारी रिफ्रैक्शन रे गोटे ही कैरेक्टर जोटा चेंज हुए सेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चेंज हुए। आमे जानिचे लाइट रो फ्रीक्वेंसी जदि न्यू हैला न्यू इज इक्वल टू सी लैम्बडा, न्यू इज इक्वल टू सी लैम्बडा। ताहले मानि लियो फास्ट मीडियम रे वेलोसिटी किछि v1 अछि लाइट रो, तो v1 जगह रे केते लिखि परिबी न्यू c इज इक्वल टू न्यू बाय लैम्बडा। तो कौन लिखि परिबी, कौन लिखि परिबी पिला माने? न्यू आमे जानिचे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी लिखि परिबो। सॉरी c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा नहीं। ताले v1 जगह रे केते लिखि परिबी न्यू इनटू लैम्बडा 1, v2 जगह रे केते लिखि परिबी न्यू इनटू लैम्बडा 2। जेतु फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट अछि तो न्यू न्यू कैंसिल हो गले केते आसी गला लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2। सेमती इटे v2 जगह रे केते लिखि परिबी लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1। ठीक अछि। हां आउ तमने गोटे डेफिनेशन पाइले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फास्ट मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन फास्ट मीडियम बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फास्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम होबो कोन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फास्ट मीडियम, दैट इज योर वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन फास्ट मीडियम। ठीक अछि। एबे गोटे टर्म जिबा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोन पिला माने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि फास्ट मीडियम टा एयर हे गला, इफ फास्ट मीडियम इज एयर, इफ फास्ट मीडियम इज एयर, यदि फास्ट मीडियम टा एयर हे गला ताहले म्यू 2 to 1 हबो जोटा हमको जणा अछि v1 by v2 एटा हे जिवो केते v1 जगह रे केते लिखि परिबा, v1 जगह रे केते लिखि परिबा c लिखि परिबा काहे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पई गोटे पर्टिकुलर सिंबल दिया जाए c बोली। आमे v1 v2 काहे नै डिफरेंस करिया पई जनकर वेलोसिटी गोटे मीडियम रे किछि आ गोटे मीडियम रे आ किछि जदि c आसी गला तो v2 लिखिबा नै c by एंड एटा एयर मीडियम पई सिंपल म्यू लिखिबा। माने आमे समस्तंकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करूचे विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो जदि बा सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एयर ने माने न तो मु कहूची जे म्यू 2 to 1 आमे एमती कहि परिबा जे मु सेकंड रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करूची फास्ट सहित। जेतु एयर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ताले मु जदि कहार भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करबी एयर सहित
तामाने से केवल ता निजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मो कथा बुझुछ तो एटा को हमें कहबा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि मु कहबी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ताले एटा ही जीवो कोन स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास ठीक अछि एटा को आउ गोटे तरीका रे पिला लिखियो केमति लिखियो पिला माने आउ गोटे तरीका रे केमति लिखियो देख मोटे काम करूचे वी डब्ल्यू बाई सी कली वी जी बाई सी कली एटा को 1 बाई सी बाई वी डब्ल्यू कली 1 बाई सी बाई वी जी कली तो एटा होची कहार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटा तो वाटर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाई म्यू वाटर बाय एटा कहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास रो ता माने एटा हे गला म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू ता माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हबो सॉरी वाटर एटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बुझिला ठीक अछि पिला तामाने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रा हमें तीनटा डेफिनेशन पाइले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू sin i by sin r गोटे डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v1 by v2 आउ गोटे डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू refractive index of glass with respect to water is equal to refractive index of absolute refractive index of glass by absolute refractive index of water. Refractive index of second medium with respect to first medium is equal to wavelength of the light in first medium by wavelength of the light in second medium. बुझा पड़े एटा कोने हल्का फुल्का न्यूमेरिकल आसे देखियो सो मोटा मोटी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रा कौन फार्मूला जानले गोटेला sin i by sin r is equal to refractive index of कोठी को जाउची कोठो आसिला mu 2 to 1 is equal to v1 by v2 mu 2 to 1 is equal to lambda 1 by lambda 2 mu is equal to c by v जानिछ एबे जिबा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मानिनियो एटा हमर हला इंटरफेस लाइट टा गुटे मीडियम रो आसिला किछि भी हेताउ से डेंसर हो रेरर हो पिला माने मानिनियो एटा रेरर मीडियम जा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 and एटा किछि डेंसर मीडियम जहार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v2 अछि मोटे काम करू जे एटा को डेंसर कर दो जे एटा को रेरर कर जे तो कोन हबो ए त एमति जीवा कथा कि नॉर्मल ठर दूरी जीवो मु जदी एठी गोटे मिरर लगेबी एंड एमती भाबरे सेट करबी मिरर को जेमति से नॉर्मल इंसिडेंस हो सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को से जो रास्ता दे आस्ते सही रास्ता दे पड़े प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कौन कहूँ से जो रास्ता दे आसीथिबो से सही रास्ता दे पड़ेगो आम जदि फास्ट मीडियम रु सेकंड मीडियम कथा चिंता करबा ताहले sin i by sin r हबो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोठी को जाउछि कोठु आसिला कोठी को जाउछि 2 को जाउछि कोठु आसिला 1 यदि उल्टा कर दबा से इठु इठ के जाउछि एबे एमती जाउछि एटा इंसिडेंट रे एटा रिफ्रैक्टेड रे ताले उल्टा कले कोन हबो नहीं भाई sin r by sin I एटा हे गला एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एटा हे गला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन sin r by sin I इज इक्वल टू कोठी को जाउछि 1 को जाउछि कोठु आसिला 2 रु आसिला तो इक्वेशन 2 एबे जदि इक्वेशन 1 आउ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करिबा ताले कोन आसी पहुंची जीवो मो पाखरे sin I by sin r into sin r by sin I is equal to mu 2 to 1 into mu 1 to 2 sin r खाई गला ताले मु लिख परबी mu 2 to 1 into mu 1 to 2 is equal to 1 so mu 2 to 1 is equal to 1 by mu 1 to 2 ठीक अछि पहला ने वर्षा जोर वर्षा घड़घड़ी होछि साउंड टा के एडजस्ट कर दो फटाफट देखि दियो एबे पिला माने आमे जिबा रियल डेप्थ apparent depth and normal shift एटा कोने न्यूमेरिकल आसे तो टिके भल से बुझो को चेष्टा कर मानि नियो एटा मो पोखरी अछि एटा होची पोखरी रो लोअर सरफेस एंड एटा होची पोखरी रो अपर सरफेस पोखरी रो डेप्थ रियल डेप्थ हला डी पोखरी रो गभीरता जोटा मानि नियो गोटे माछ एठी सोइछि मानि कि चलिबा में पानीटा स्थिर अछि और ट्रांसपेरेंट अछि माछटा एठी अछि जोटा हम ऑब्जेक्ट बोली कहूचे कौन से जिनस हमें केते बेले देखि पारे फंडामेंटल कांसेप्ट कौन फंडामेंटल कांसेप्ट एटा गोटे बॉडी रो जदी किछि रे आसीबो हम आखि भीतर पसिबो देन आमर रेटिना रे जाई कि गोटे इमेज फॉर्मेशन करिवो हमें सेटा को देखे सेमती ई ऑब्जेक्ट रो जदी रे जाई कि हम आखि भीतर पसिबो ताहले जाई कि हमें देखि परिबा बहुत गुडा रे जाउची बाहर को मु बाहर बसी देखुची एठी कोठी बाहर गुडा बसी देखुची माछ को गुटे रे सपोज नॉर्मल इंसिडेंट हला सीधा पड़ेला आउ गुटे रे एमती गला एई जगह रे मु गोटे काम कली गोटे नॉर्मल ड्रॉ कली ये कौन है एटा वाटर जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एटा एयर ठीक है एटा एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एटा सपोज हमर आखी प्रैक्टिकली आखि तो एते बड़ हेई नथिबो
आखिटा एते बड़ हेई नथिबो आखिटा तो बहुत छोट हमर ताहले ये दुईटा जाक रे जदि जाई कि मो आखि भितर पसिले ताहले मु माछर गोटे इमेज देखि पारिबी से दुईटा जाक रे सेते बेले पसि पारिबे जते बेले सपोज ए पॉइंटर नाम ए दउचे पॉइंटर नाम बी दउचे ए आ बी बहुत पाखरे थी मार्केट तो बहुत छोटा ना आखि भीतर पसना दरकार तो प्रैक्टिकली ए बी इज वेरी क्लोज टू ए ना हबनी ये तो नॉर्मल इंसिडेंस ला पळेला बाकी आ गुटे रे तो एटा को हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नहीं चे एटा जदि आई तो एटा भी केते आई एटा गोटे काम करी आम आखि सब बेले रे को सीधा इमेजिन करे बंका डंगर इमेजिन करे तो आम आखि इमेजिन करिवो मे बी इमेज टा 80 फॉर्मेशन हिच खाली जैसे इमेज को एटे देखियो सेमती भरी टोटली तळ लेयर टाको एठी देखि देखियो माने तळे बाली अछि मते बालीटा भी ऊपर को उठिला बले देखा दियो ई जोटा मु देखिली सेटा को मैं कहबा अपारेंट डेप्थ एटा को मैं कहबा रियल डेप्थ एक्चुअली डेप्थ आम पोखरी डेप्थ एतिकी बट मते लागुची एतिकी डेप्थ तमाने प्रैक्टिकली आमे जतले माछ धरिया को जाउछे आमे जतले माछ धरुछे हमको माछटा जेतिकी पाखरे लागुची अछि बोली से सेतिकी पाखरे नै दूरे रे अछि हमको लागुची पाखरे अछि ता माने ई लेयर टा टोटल बा माछटा एतकी शिफ्ट करी जाई छी एंड एटा को हमें कहिबा नॉर्मल शिफ्ट ताले डायग्राम रो मु कहि परिबी नॉर्मल शिफ्ट हैला रियल डेप्थ एटा होची रियल डेप्थ एटा होची रियल डेप्थ एंड एटा ला अपारेंट डेप्थ तो नॉर्मल शिफ्ट हबो रियल डेप्थ माइनस अपारेंट डेप्थ ठीक अछि तो एटा जदि आर तो एटा भी आर गोटे काम करूची साइन आई केते हबो साइन आई हबो एबी बाय ओबी एबी बाय ओबी साइन आर केते हबो पिला ए पिला साइन आर केते हबो साइन आर हबो एबी बाय बी आई मु तुमको पिला स्टार्टिंग रो कहिची आमे सेते बेले माछटा को देखि परिबा जेते बेले बी पॉइंट टा वेरी क्लोज टू ए हिदिबो हम आखि एते बड़ नहे यदि बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ए if b point is very close to a then we can say bo is approximately equal to ao यदि bo बा ob is approximately equal to a मन रखो पिला if b point is very close to a then OB is approximately equal to OA. Similarly, BI is approximately equal to AI. BI is approximately equal to AI. ठीक है पिला
नाउ sin i केते हिजो ab by oa sin r केते हिजो sin r केते हिजो ab by ai इबे sin i by sin r sin i by sin r पिला माने एआर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मने रखिबो कोउठी को जाउची मने रख कोउठी की जाउची डेंसर रु एरर को जाउची 1 को जाउची कोउठु आसिला 2 दैट इज इंप्लाइज टू sin i जगह लिखि दुची ab by oa by ab by ai is equal to मैं को लिखि दुची mu1 by mu2 तो ab ab खाई गला तो ai by oa is equal to mu1 जगह 1 लिखिबा mu2 जगह mu लिखिबा ai टा कोन कि रे पिला अपारेंट डेप्थ तो मु एमती लिखि दोची mu is equal to oa by ai oa हैला कोन रियल डेप्थ कोन पिला माने रियल डेप्थ बाय कोन अपारेंट डेप्थ बाय कोन अपारेंट डेप्थ ताले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो बहुत गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला मन रखियो कोन पिला रियल डेप्थ बाय अपारेंट डेप्थ म्यू इज इक्वल टू कोन रियल डेप्थ बाय अपारेंट डेप्थ ठीक अछि ताले नॉर्मल शिफ्ट केते हे जेबो रियल डेप्थ तो d रहिला and apparent depth केते लिखिबा apparent depth is equal to real depth by mu that means d by mu तो नॉर्मल शिफ्ट ही जीवो d जदी कॉमन नै जीवा 1 minus 1 by mu एटा कोन हे गला मोर पिला नॉर्मल शिफ्ट पिला माने आमे गोटे कथा कंक्लूजन रे पहुंचले जदी ऑब्जर्वर तमे जोटु देखुचो ऑब्जर्वर जदी रेरर मीडियम रे अछि एंड ऑब्जेक्ट जदी डेंसर रे अछि ताहले आमे एमती कहि परिबा जे ऑब्जेक्ट ऊपर को उठिला भली लागिवो जदी सिचुएशन उल्टा कर दबा ऑब्जेक्ट जदी रेरर रे रहिला एंड ऑब्जर्वर जदी डेंसर रे रहिला ताले दूरी गला भली लागिवो माने ऑब्जेक्टटा जोठी अछि ऑब्जेक्ट जदी डेंसर रे अछि एंड ऑब्जर्वर जदी रेरर रे अछि ताहले ताकू लागिवो जे ऑब्जेक्टटा ऊपर को उठी जाईछि ते हल्का उठिछि नॉर्मल शिफ्ट जोटा एति के उठी जाईछि ऊपर जदी सिचुएशनटा उल्टा कर दै थांते ऑब्जेक्ट थांता रेरर रे एंड ऑब्जर्वर थांता डेंसर रे उल्टा ही थांता जदी ऑब्जेक्ट मानिनो एटा ही थांता रेरर एटा ही थांता डेंसर अने एटा तळु को खसला बली लागि आगुरी तळे तमे समझ ओ कथा बुझा पडुची ताला में इंपोर्टेंट फार्मूला गोटे मन रखबा पिला एई फार्मूला तो नॉर्मल शिफ्ट रो फार्मूला मन रखियार आवश्यकता नै हमका आवश्यकता छै को फार्मूला म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपारेंट डेप्थ एटा हमको मन रखिबार अछि ठीक अछि।